Hello, everyone. I hope I am audible and visible. No, that's like thoda sa delay because of some particular issues. Hi, Rich Parna. Yeah. Okay, so like we have bad news. Like the bad news is Islamabad the talks are failed. Yes, and as expected, the main reason behind this particular talk fail was Israel. Lot of न्यूज मतलब जो अल जजीरा है द हिंदू ने इवन कोट किया है सीएनबीसी द गार्डियन द न्यूयॉर्क टाइम्स द वॉशिंगटन पोस्ट all of them are reporting similar kind of thing where what we can say the problem lies between Israel and America's inclination toward Israel. Right. And apart from this, there were some particular violations that happened. And ultimately, हुआ यही कि that peace talk which we were expecting कि भैया that will actually end the war and it will help us getting better. वो जो है वो definitely rule out हो गई. So we'll talk about it in detail. Right, कि क्या है क्या नहीं है. Then let's talk about the last 2 days में हुआ क्या. I'm not going to talk about IPL. तो रजत पाटिल had a very good मैच है ना मजा आ गया था क्या ठीक है टॉकिंग अबाउट अदर इश्यूज सो पूरे देश में जो बंगाल इलेक्शन है दैट इज इन फायर यस ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का हर एक मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीयूष गोयल अमित शाह देयर आर सेवरल चीफ मिनिस्टर्स लाइक योगी आदित्यनाथ राइट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड some opposition leaders as well they all are at Bengal for the election campaign and other thing right I'm not sure who's running the Delhi currently अब प्रॉब्लम ये है कि बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर is it real that they forget C mine location? There are some particular news. There are some news, है ना? Even ईरान की तरफ से भी कुछ particular चीजें आई हैं कि there is a pack of what we can say mines which were at certain point है ना और उसके लिए उन्होंने एक सेफ रास्ता भी बताया था which is closer to the Iran है ना their embassy foreign ministry the IRGC both of them have tweeted such kind of thing but confirmation कि they forget the mine ये अभी भी confirmation जो है वो आना बाकी है but है news है so Bengal election is going on SIR is in news है ना apart from Samay Raina's new YouTube video. SIR is in news, whether that is Dhruv whether that is Twitter, whether that is Instagram. People are sharing clips from either from the what we can say Samay Raina's video or they are sharing the clips from the Dhruv video, but they are sharing. Bengal SIR is in news because people are somehow started calculating this particular move that something is not right with the election and election commission's biasness also. Let's hope for the best. Soon, judiciary will intervene and try to figure out what is right, what is wrong. But Bengal election was in news. Then the next thing that was in news was that Tamil Nadu death penalty. Yes. So there was several key cases जिसका कल मैंने डिस्कशन देखा ट्विटर पे मतलब मैंने कुछ वो किए हैं जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है तो मेक श्योर कि आप उसे फॉलो करें द फर्स्ट वन इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पी श्रीहरन राइट किरण वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो दीज वर सम पर्टिकुलर केसेस जिसपे कल डिस्कशन चल रहा था उन्होंने सीधे तौर पे ये बात बोली कि जो ट्रायल कोर्ट है जिन्होंने कस्टोडियल डेथ के लिए सदनकुलम के लिए दे गेव द डेथ पेनल्टी दे हैड जस्ट टू ऑप्शंस वन इज लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट right and death penalty it cannot give a fixed term of lifetime imprisonment of 20-30 years without remission तो देयर वाज पर्टिकुलर केसेस जिसमें ये बात होनी चाहिए कि व्हाट कैन बी डिफाइंड मतलब डिफाइन क्या हो सकता है व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर केस जिसे आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर में वो कर सकते हो देयर वाज अ लीगल प्रॉब्लम जो डिस्कस की गई थी कस्टोडियल डेथ वाले पार्ट में in उस केस में दैट वाज सुप्रीम कोर्ट अलाउज स्पेशल कैटेगरी पनिशमेंट life without a remission
but only High Court and Supreme Court can impose it, not trial court. So yes, there is a case जहाँ पे डेथ पेनल्टी मिली है, but उस डेथ पेनल्टी के लिए जो ऑथराइज कोर्ट है ना, that cannot be the what we can say ट्रायल कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है कि भाई वो पनिशमेंट जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का विदाउट रिमिशन जो है वो दे सकते हैं, बट दे डिड नॉट अलाउड इट। सेकंड वन, आर्टिकल 21 फेयर ट्रायल का जो पर्टिकुलर प्रोपोर्शनल पनिशमेंट एंड फेयर ट्रायल का जो वो होता है, राइट होता है, वो वॉयलेट करता हुआ दिखता है। ट्रायल कोर्ट फोर्स इनटू एक्सट्रीम पनिशमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ मिडिल ऑप्शन, राइट। जो जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी है, स्ट्रक्चरल डिफीट है, डिफेक्ट सॉरी, ये इस पे बात हो रही है। सो यस, दिस इज नॉट जस्ट अ कस्टोडियल डेथ केस, इट्स गोइंग टू challenge the existing system of lifetime imprisonment, right, versus the death penalty. It's a great debate, है ना, कि हमारे सिस्टम में ऐसा क्यों है कि ट्रायल कोर्ट जो है उसके पास इस लेवल की अथॉरिटी नहीं है, लाइक व्हेन दे आर हैविंग सच काइंड ऑफ केसेस। तो है अभी ये डिबेट काफी ज्यादा, मैंने कल कुछ लोगों को ट्विटर में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हुए पढ़ा, कमेंट्स में, अदर पर्टिकुलर उसमें, दिस वाज गेटिंग वेरी 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 गुड। तो इसके बारे में पढ़ लेना कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ, है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट बंगाल एसआईआर हमने बात कर ही ली है। विमेन रिजर्वेशन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। यस, 2023 में एक लॉ आया, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिटेल में दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। दैट वाज नारी शक्ति, अब लाइक वंदन अधिनियम, right? Yes, I told you that this particular government is having a good amount of naming, what we can say, talent. So they named it Nari Shakti Vandan Adhiniyam, है ना? That actually provided 33% reservation, right, to Legislative Assembly and Lok Sabha. And this is getting delayed, है ना, because of two reasons. That was supposed to be delayed. One is the census, and after census, we need delimitation. Now, the problem is delimitation is something which is not being supported by all parties. This bill came into September 2023 with a special session. Government of India ने special session बुलाया था, and in that particular special session, they asked for a 33% reservation for the women, and every party supported this particular what we can say act, is this particular bill, right? And it passed instantly, and they had good amount of debate. They had backgrounds like कुछ लोगों ने बहुत प्यारी डिबेट की कि किस तरीके से when we involve the women in the local governance like पंचायती राज, नगर निगम, नगर पालिका, they started working exceptionally well, except for some cases जहाँ पे male are representing the female. But their decision-making authority is good. There was one particular argument that if there is a problem that is inside house, women knows better than anyone else. So it was a very good particular time, and 2024 general election happened. There was no delimitation. There was no 33% reservation. The question was when it's going to be implemented. They are calling it 2029 after delimitation, 2029 general election. Right now, the problem is with the delimitation. There is a divide between North India and South India. I'll tell you what is the debate. Right, the debate is North Indian population have increased very drastically. Why? The South Indian population is either stagnant or decreased. So the debate is if delimitation happens, right? The representation of northern India or northern Indian state will increase in the parliament, while southern Indian state, the delimitation after delimitation process, their representation will decrease. This will hurt the federal structure, first thing. Second thing, the southern Indian states are clearly asking for one particular question. We implemented the policy of population control well, so why our representation is getting reduced? Is it a punishment for implementing a very well, what we can say, studied policy against population? So South Indian states are not in favor of delimitation, right? North Indian states are in favor of delimitation. Now understand the politics. Majorly South Indian states are part of the opposition part, opposition alliance, that is India bloc. The northern India is home for the current ruling government, that is BJP. So if
The northern Indian representation will increase. BJP can form a government from the northern Indian election itself, right? उनको southern Indian state की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. So southern India is not ready for this. A very good editorial है ना, has is in today's newspaper from Srimati Sonia Gandhi, है ना, जिन्होंने अपनी बात रखी. It's a very good editorial, आपको पढ़ना चाहिए. उन्होंने बोला delimitation, not women reservation is the issue. उनका ये कहना है कि delimitation is the issue, not the women reservation. She said कि in 2023 we supported women reservation, right? We are supporting caste-based census, right? We are supporting all the terms that is supposed to be followed in social justice case. But delimitation is something which is a bias, and it's going to hurt the federal structure of Indian Union. That's why problem isn't delimitation, not a women reservation bill. Right? Yes. Polarization won't work. Leads to delimitation. I'll not go with the political stance, but somehow Southern Indian states में बीजेपी का performance is not really very good, right? Except अगर मैं महाराष्ट्र छोड़ दूँ, I'm currently उड़ीसा, तो Southern Indian states, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, right? These are some states जहाँ पे बीजेपी का performance अच्छा नहीं रहा है. So yes, you can say this can be a political stance. But अभी नहीं. Let's hope for the best. हमारी judiciary बढ़िया काम करे. So there is a debate जो इन चीजों पे बात कर रही है ना, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. बट हाँ, सदर्न इंडियन स्टेट्स आर नॉट पर्टिकुलर एक्सेप्टिंग दैट डिलिमिटेशन, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं चीजों को क्या करेगा, परेशान करेगा. देन हमारी लेजेंडरी सिंगर आशा ताई, आशा भोसले जो है, उनका देहांत हो गया कल. इट वाज अ शॉकिंग इंसिडेंट, है ना. एक बहुत प्यारा आर्टिकल है. तुम लोग तो भी नए हो इस जनरेशन में, आई एम नॉट श्योर हाउ यू फॉलोइंग इट, बट ये जो आर्टिकल है उसे आई गेस सभी को पढ़ना चाहिए. दैट हाउ द लेजेंड एक्चुअली लेफ्ट दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, है ना. उनके गाए हुए गाने दे आर स्टिल फेवरेट. आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइस, जेंजीज में भी वो उतनी ही पॉपुलर थी. और remember, there are some particular songs that is listed over here. जैसे अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने ये मेरा दिल, राइट. और one of my favorite in आंखों की मस्ती, and my like most favorite मेरा गुस्सा मान from इजाजत 1987, राइट. मतलब these are some songs जो legend है. रंगीला रे राधा कैसे न चले, and that particular thing क्या कहते हैं, याई रे there is a lot of songs जो उन्होंने वो किए हैं. She also nominated for Grammy, right? यस, जो वो थे क्या कहते हैं, उस्ताद अली अकबर खान जो थे, उनके साथ. एंड एक बार शायद 2005 में भी उनका हुआ था. एंड शी वन दादा साहब फाल्के, शी वन पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट व्हाट वी कैन से सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. एंड आई हैड वन ऑफ द लाइव कॉन्सर्ट इन आईआईटी मुंबई. आईआईटी बॉम्बे में हुआ था इनका लाइव कॉन्सर्ट ड्यूरिंग द मूड इंडिगो, आईआईटी मुंबई का जो कल्चरल स्पोर्ट्स फेस्ट होता है. And I was present over there. She was legend on the stage, and uh, though she was not very young, but the energy she had on that particular stage was exceptional. ऐसा लग रहा था कहीं पे सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ है, right? So that is what Asha ji was, and we lost her. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि तुम जेंजीज उनके गानों को सही मतलब समझो, एंड तुम लोग फॉलो करो कि क्या किया क्या नहीं. बट ठीक है, वी लॉस्ट हर, दैट इज बैड न्यूज फॉर इंडिया एंड इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री. शी वाज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, है ना, फॉर ऑल दोज हु वर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. खैर, आशा ताई को श्रद्धांजलियां, एंड आई होप हम उन्हें कभी ना भूलें, एंड शी हैव अ गुड लाइफ, राइट. एंड चलो आगे बढ़ते हैं. एंड ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए भी एक एडिटोरियल है जो आपको पढ़ना चाहिए, राइट.
इट इज एक्चुअली अबाउट कि भैया टूरिज्म वर्सेस ट्रेड इसको किस तरीके से डिबेट को सेटल किया जाए. मतलब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज स्टिल इन हंटिंग व्हाट वी कैन से स्टेज where tribals are supposed to be displaced, right? Biodiversity is supposed to be compromised. It's one of the mega infrastructure project that will give a strategic edge, strategic ahead, right? But also it's going to harm a lot of things. Okay, so National Green Tribunal, pendency of cases, forest right of indigenous people, environmental clearance, sustainable development doctrine, Article 21, Tribal Rights FRA 2006, judicial review for environmental decision. बहुत सारे पॉइंट पे ग्रेट निकोबार जो है वो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उस पर अभी डिबेट चल रही है. मेक श्योर करना इसको फॉलो करना. क्लैट इज वन ऑफ द पर्टिकुलर एग्जाम जो इन्वायरमेंटल इश्यूज को काफी अच्छे से यूज करता है अपने उसमें. ठीक है. एंड उसके अलावा कुछ खास ऐसा पर्टिकुलर न्यूज में नहीं था. राइट. सो लेट्स डिस्कस द इस्लामाबाद टॉक्स कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. राइट. जस्ट अ मिनट. मैंने लाइक इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया. एंड जिस तरीके से ये टॉक स्टार्ट हुई, जिस तरीके से ये टॉक प्रोसीड हुई एंड द वे इट एंडेड, राइट, it has implications and a lot of experts have put their opinion in different newspaper. uh, कल तक ये एनालिसिस बंद हो जाना चाहिए सुधीर. थैंक यू सुधीर. राइट. ओके, सो इस्लामाबाद टॉक्स को फॉलो करने के लिए काफी अलग अलग रिसोर्सेज जो थे वो थे. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या निकल के आता है. लेट्स डिस्कस अबाउट, है ना. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी टाइम लाइन दैट इज नेसेसरी. दैट वाज 10 टू टेक्निकली 12th ऑफ अप्रैल. आज हम 13th ऑफ अप्रैल में है. राइट. एंड उसमें क्या क्या हुआ हम डे वाइज डिस्कस करते हैं. सो थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक हो सकता है बट लेट्स डिस्कस दिस. ऑन द 10th ऑफ अप्रैल द टीम्स आर. हाँ, उसको डेलीगेशन कह सकते हो तो. बट डेलीगेशंस जो है वो पहुंचे थे. सो इरानियन रिप्रेजेंटेशन में पार्लियामेंट्री स्पीकर थे दैट इज मोहम्मद बागेर गालिबा, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची एंड डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर वाज आल्सो देयर. यूएस की तरफ से जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट थे, राइट, और विटकॉफ क्या कहते हैं, स्टीव विटकॉफ एंड जेरेड कुशनर थे. एंड दे वर सपोज्ड टू हैव डिस्कशन. फिर प्री टॉक मीटिंग में जो आसिम मुनीर है आर्मी चीफ एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने प्री टॉक मीटिंग और बाकी सारी चीजें की. एंड फाइनली 11th ऑफ अप्रैल वाज द डे जब डिस्कशन शुरू. राइट. सैटरडे का दिन था एंड सैटरडे इज ऑलमोस्ट क्रिटिकल क्योंकि हर बार डोनाल्ड ट्रम्प सैटरडे को कुछ ना कुछ करता है. तो डिस्कशन जो हुआ उसकी बात कर लेते हैं. सो द डायरेक्ट एंगेजमेंट बिटवीन द पार्टी स्टार्टेड इन द Serena Hotel in the Saturday afternoon. Right, there was a 21-hour long discussion. Right, until this Saturday morning. वो आफ्टरनून से शुरू हुआ और सैटरडे मॉर्निंग संडे मॉर्निंग तक चला. राइट. एंड देयर वर डिफरेंट एक्सपर्ट राउंड. Technical teams from both the nations joined the talk to discuss specific proposal regarding the nuclear enrichment and Strait of Hormuz. So दो major point of जो particular discussion थे वो थे Strait of Hormuz and जो nuclear enrichment program है उसकी बात कर लेते हैं. ठीक है. तो थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा. टेक्निकलिटी देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड न्यूक्लियर एनरिचमेंट, दीज वर द टू पॉइंट जिसमें अमेरिका ने बहुत पहले से डिस्कशन स्टार्ट कर रखा था. They wanted that Iran is having approximate 400 to 500 kilograms of enriched uranium. Iran strictly mentioned about it that we have 60% enriched uranium. To make a nuclear bomb, they need approximate 90% enriched uranium. Right. So उनका ये मानना है कि they don't have any nuclear weapon and they have clearly set their doctrine on the weapon of mass destruction that they are not going to get into this. Americans wanted those enriched uranium to be part of their what we can say vault. Right. Iran strictly said we are not going to do it. We are using our nuclear enrichment plant for civilian purpose, for the energy purpose. तो हम ये काम नहीं करने वाले. The second major point of discussion was Strait of Hormuz. So हो ये रहा है कि Strait of Hormuz is situated between Oman and Iran. Now, when it comes to the international waters, the depth of the water, the
डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट लाइन, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो वहां पे मैटर करती है. So, सबसे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिस्कस अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट, राइट. एंड टेक्निकल एस्पेक्ट के बाद दे वर डिस्कसिंग कि हु शुड कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. द मेजर पॉइंट इज, ओमान के एक मिनिस्टर है जिनका एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट आया था. इट्स अ नेचुरली फॉर्म स्ट्रेट, राइट. सो इट शुड नॉट बी लाइक इट शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन. But Americans are like, we are going to control it. The Iranians are like, we are going to control it. Yes, ये Al Jazeera ने report किया है कि America strictly said we should have a hold on Strait of Hormuz, while Iran was strict on this particular point कि they are going to have a hold on Strait of Hormuz. So एक technical round का discussion mainly दो topic पे चला. Rest जो है that was not very much technical. हम conditions पे बात करेंगे. Right. After the 21 hours long debate, 12th of April को जो जेडी वेंस का स्टेटमेंट था उनकी तरफ से दे प्रोवाइडेड अ फाइनल ऑफर, राइट. उन्होंने सीधे तौर पे अनाउंस किया अर्ली संडे दैट यूएस हैड प्रेजेंटेड इट्स फाइनल एंड द बेस्ट ऑफर बट ईरान हैज चूजन नॉट टू एक्सेप्ट द टर्म. So they provided the final offer, which according to them was the best, but Iran ने choose नहीं किया. The primary striking point remained Iran's refusal to permanently forget its nuclear program and US demand to total access of the nuclear facility. ये उन्होंने वो किया है और फिर उसके बाद चले गए. मंडे 13th ऑफ अप्रैल की बात अगर करें करंट अपडेट्स की, तो थोड़ा सा जो पर्टिकुलर अभी इंफॉर्मेशन मिली है कुछ 3-4 बजे सुबह तक की, तो यूएस मिलिट्री सेटकॉम अनाउंस्ड that it would begin the blocking of the Iranian port starting from 10 a.m. today. So जो भी उनका टाइम है, मतलब ठीक है ना चाहिए ग्रीनविच मीन टाइम है, उसपे उन्होंने ये बात बोली है कि दे आर गोइंग टू ब्लॉक द ईरानियन पोर्ट बाय द 10 AM GMT. सो 13th of April की आज की अपडेट ये है कि ये ईरान के सॉरी यूएस के सेटकॉम जो मिलिट्री कमांड है वहां से न्यूज आई है. स्टेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात करें तो आईआरजीसी जो है ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, राइट, दे स्ट्रिक्टली मेंशन दैट any military vessel that is attempting to transit from the strait would face a strong response those civilian ships and remain permitted. Those civilian ships remain permitted. Ceasefire की भी uncertainty चल रही है. Technically, the ceasefire was supposed to be on the 22nd of April, right? और वो 22nd of April तक चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं. सो ग्रोइंगलैंड्स जब ये सीजफायर की टॉक्स करने गए थे तो वापस लड़ने लग गए थे. हाँ, ये हुआ है, राइट. लेट्स डिस्कस कि वहां पे मेन जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है उनकी क्या बात है. तो सबसे पहले की आउटकम्स की बात कर लें कि इस पर्टिकुलर डिबेट का या टॉक का आउटकम क्या हुआ. तो फर्स्ट आउटकम इज नो डील. यस, यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने वहीं की वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड ही कंफर्म दैट द टॉक एंडेड इन अ सेटलमेंट, सेटलमेंट बोलो स्टेलमेट, राइट, stating that US presented its offer but Iran declined. यूएस नेवल ब्लॉकेट और क्या कहते हैं फिजाइल सीज फायर, इन पे डिबेट अभी चल रही है. अब जो मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट्स है उस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि इस चीज पे बात नहीं बनी. सो फर्स्ट आई सेड कि न्यूक्लियर जो पर्टिकुलर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, राइट, उस पे बात नहीं बनी. एंड वी डिस्कस अबाउट इट कि क्यों नहीं बनी. Iran's simply mentioning that the right to use enriched uranium for the civilian purpose after signing the Nuclear Proliferation Treaty, after giving access to the International Atomic Energy Agency to their facility, it's our right to do this. मैं स्टेटमेंट सुना देता हूँ. ईरान refused to surrender their enriched uranium, calling it a right to enrich uranium for the medical and civilian purpose, right, and which looks correct also. ईरान के एक पड़ोसी है, थोड़ा दूर का पड़ोसी है, बहुत ही प्यारा है, दैट इज इसराइल, राइट. It is not having any particular like sign on the non-proliferation treaty, but they have nuclear arsenal. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम. अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन हो जाए और इसराइल के पास भी हो जाए तो वो जो पावर बैलेंस है वो शिफ्ट हो सकता है. तो दैट मतलब अभी इसराइल जो है वो काफी स्ट्रांग होल्ड रखता है बिकॉज ऑफ अमेरिकन सपोर्ट एंड एवरीथिंग. अगर अमेरिका का सपोर्ट हट जाए तो इसराइल बहुत दिनों तक टिक नहीं पाए. सो दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग. न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए उनकी बात नहीं बनी.
The second particular problem that was Strait of Hormuz, as we discussed, ये बहुत ही टेक्निकल इशू था जिस पर डिस्कशन हुआ. Iranian demanded a continuation control over the waterway and a right to charge transit fees, which US rejected as illegal tolls. तो वो चाहते थे कि हमें ट्रांजिट फी मिले, बट ये जो ओमान के साथ शेयर करते थे, they were clear about it. But US is saying it's a naturally formed physical feature and ये illegal toll होगा, so we are not going to accept it. The third point of what we can say a problem was sanctions, right? And क्या कहते हैं reparations, right? Yes. Tehran sought war reparation and unfreezing of billions in the seized asset as a prerequisite for the permanent ceasefire. उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि हमारे पास हम we need a reparation for the war because US and Iran were on a peace talk when you attacked on us. सो हमें उसका रिपरेशन चाहिए जो वॉर में आपने हमारा नुकसान किया है. सेकंड दे सेड कि यू हैव फ्रीज अप्रॉक्सीमेट 27 to 30 बिलियन डॉलर्स ऑफ एसेट ऑफ ईरान एट डिफरेंट प्लेस. हमें वो क्या चाहिए, फ्री चाहिए. थर्ड, दे सेड कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस हैं वो ईरान से हटने चाहिए सो दैट वी कैन ग्रो इकोनॉमिकली इक्वली एंड दिस इज आवर राइट. 20 to 30 बिलियन डॉलर्स ऑफ सीज्ड एसेट जो है, फ्रीज्ड एसेट जो है, उनको ओपन करने के पीछे ईरान ने सिंपली ये बात बोली कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ दैट परमानेंट पीस, राइट? और आपको रिपरेशन जो है उसको देना पड़ेगा. अमेरिका ने उसको देने से मना कर दिया. द फोर्थ मेजर पॉइंट जिस पे डिबेट हुआ, which actually was not a major particular discussion but it was something जो कि ईरान की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, that was military presence. Yes. The Iran's 10-point plan included complete withdrawal of US force from the Middle East, a demand US delegation found unacceptable, and there was no major debate on this. So ये चार ऐसे मेजर पॉइंट्स थे जिसमें ईरान एंड यूएसए दोनों के दोनों एग्री नहीं हुए. देयर वर like other point of discussion as well that क्या होगा क्या नहीं होगा. अब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो बाहर निकल के आए हैं, दे आर बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम अल जजीरा एंड पाकिस्तान लोकल रिपोर्टर्स. वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट पे एट द वेरी बिगिनिंग द टॉक्स वर स्मूथ, राइट? इट वाज लाइक कि अभी जो है जल्दी से चीजें ठीक होने लगेंगी. देन केम द टू मेजर ब्लॉक. फर्स्ट वन इजरायली जो पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कॉल जीडी वैंस के पास गया था. And there was a regular call discussion of GD Vance with the Trump as well. So when Israeli Prime Minister and Trump called one by one, this particular peace talk started getting a bit tense. ये रिपोर्टेड है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंदर बैठ के कोई सुन रहा था, बट दिस वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ अल जजीरा एंड अदर. Then second particular problem was Iranian warheads, Iranian warships, sorry, right? Yes, when the peace talk was happening, Iranian warship were reaching toward the strait. And Iranian warship कह रहा हूँ मैं, sorry guys, right? US warship, राइट? यूएसए की वॉरशिप जो है वहां जा रहे थे एंड दिस वाज समथिंग जो देखा गया एज एन एग्रेशन. ईरान ने काउंटर भी किया इस चीज को एंड दे द सेटकॉम पुट अ ट्वीट दैट आवर शिप्स आर क्रॉसिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. द आईआरसी पुट अ ट्वीट that if any particular military vessel is trying to cross that particular strait, we are going to take strong action against it. राइट. देन ईरान और यूएसए दोनों की डेलीगेट्स को जो है बाहर से फोन आया, दैट इज उनके कंट्रीज से. Iranian demanded that this should not be very good for the peace talk. You should actually call this particular kind of thing that before we ended our discussion. USA जो है उन्होंने इस चीज को प्रोवोक करने की कोशिश की and the things were not very happy. Right. The third major particular thing जिसके कारण काम नहीं बना, right, that was Lebanon. यस, लेबनान पे अब जाके दुनिया भर, स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, कंट्रीज लाइक स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द लाइक Israel, that US should put pressure on Israel and stop
this particular genocide in the Lebanon. I'm not sure how they got the eyes to saw these particular thing, or they got the vision to saw these particular thing in Lebanon. It was 2.5 years of a massacre that happened in Gaza, and nobody talked about it. बट अभी इकोनॉमिकली ये लोग फंसे हुए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कारण सो दे आर टेलिंग अमेरिका कि ये इजराइल को so Iran wanted a ceasefire agreement for Lebanon as well. They said Lebanon was part of discussion. Israel is continuously attacking on it. They attacked on Lebanon just after a few minutes, right when the ceasefire was announced. They are still attacking on Lebanon. We got reports that they have killed 13 military personnel. They killed some particular UN aides. They killed the medical workers. और उन्होंने काफी चीजें जो हैं वो बोली कि लेबनान एक मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन था जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा था इसराइल इज नॉट रेडी फॉर दिस फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर इसराइल बट उन्होंने चीजों को मतलब जो है वो अपने फेवर में रखा कि नहीं यार हम सरेंडर करने नहीं आए वी आर पार्ट ऑफ डिस्कशन तो हम डिस्कशन करेंगे एंड वी वांट अ रिजल्ट राइट अमेरिकन और ईरान के बीच में इन मेजर पॉइंट्स पे बात नहीं बनी दीज वर द फैक्टर्स रोल ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे दो लोगों की बातें होनी चाहिए थी है ना इफ यू आर वाचिंग इंडियन न्यूज चैनल डोंट वॉच इट क्योंकि ये लोग कुछ तो भी कर रहे थे इंडियन न्यूज चैनल वाज आस्किंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी एक्सपर्ट कि सेरेना होटल जहाँ पे टॉक्स हो रही थी हु इज गोइंग टू पे द बिल ऑफ सेरेना होटल राइट हाँ विल पाकिस्तान सेंड द बिल टू द यूएसए मतलब ये कोई डिस्कशन था ही नहीं बट दे वर डूइंग इट लेट्स गेट इनटू दिस चाइना वाज अ गारंटर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉक एंड पाकिस्तान वाज अ मीडिएटर सो देर आर सम पर्टिकुलर न्यूज जो अल जजीरा ने कोट किया है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर और जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मलिक इन दोनों को चाइना से रेगुलर कॉल्स गए थे फॉर द मीडिएशन एंड मीडिएशन के दौरान भी कॉल गए थे कि व्हाट शुड वी सपोज टू डू पाकिस्तान tried level best so that the talk may like, go a bit longer so that they can come to some particular point of agreement. So पाकिस्तान की जो भूमिका रही है जो रिपोर्ट की गई है from different newspaper. That was good. Pakistan tried it. They also tried कि चलो अभी बात नहीं बनी है. So should we increase the time period of ceasefire so that we can come to certain agreement? But अभी उसपे कोई बात नहीं हुई है. China, on the other half, they also wanted to have some particular agreement so that this particular war ends. चाइना के अपने पर्टिकुलर वो जुड़े हुए हैं कि कहना चाहिए पॉजिटिव जुड़े हुए हैं फ्रॉम द ईरान चाइना इंपोर्ट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान almost 80% of Iranian oil goes to China right and gas is also being imported from the same particular region and apart from this Russia also was involved in the back side and they wanted to have this peace talk but वो पीस टॉक नहीं हो पाई अगर बात करें स्टेटमेंट्स की जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स उसके बाद आए हैं उसकी तो जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस थे यूएस के उन्होंने बोला कि यूएस negotiated in a good faith Iran refusal to accept term was bad news for Iran President Trump stated that the US would finish up Iran if it did not abandon its nuclear ambition सो अभी बात चल रही थी एंड अमेरिका की तरफ से चाचा ट्रंप ने सुबह सुबह बीपी की गोलियां खाई थी आई एम नॉट श्योर वो कौन सी गोलियां हैं उन्होंने फिर से धमकियां देना शुरू कर दिया सो यूएस की तरफ से जो थ्रेट आ रहे थे दैट वर कंटिन्यू इवन आफ्टर टॉक एंड ड्यूरिंग द टॉक ईरान's foreign minister Abbas Araghchi he made a very good point एक तो जो ये लोग डेलीगेशन लेके आए थे उसको उन्होंने मिना 168 नाम रखा था they put the photos of those children children who lost their life in that particular attack with their school bags and सारी चीजें right and some other particular thing so ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जो थे अब्बास अरागची राइट उन्होंने यूएस के लिए जो बात की उन्होंने बताया कि यूएस he said he accused US of shifting goalposts when the deal was inches away right he is talking about that peace talk which were happening before this particular war Parliamentary Speaker Mohammad Ghalibaf vowed that Iran would not submit its to any military threat. So ईरान की तरफ से सीधे तौर पे बोल दिया गया कि हम इसका काउंटर करेंगे यूएस थ्रेट कर रहा है लेट्स टॉक अबाउट टू मोर कंट्रीज है ना सबसे पहले बात करते हैं किसकी पाकिस्तान की तो जो फॉरेन मिनिस्टर है इशाक डार
He thanked both sides for the opportunity to mediate and urged them to uphold the current ceasefire to prevent the regional catastrophe. But I'm not sure कि they are going to listen the way they are saying. Now, एक particular statement कहाँ से आया है? रशिया से आया है। तो जो व्लादिमीर पुतिन है, राइट, ये अगेन कोट किया गया है द गार्डियन की तरफ से, अल जजीरा की तरफ से। व्लादिमीर पुतिन हैज ऑलरेडी रीच्ड आउट टू इरानियन प्रेसिडेंट, right, Pezeshkin, offering to step in as a mediator following the US withdrawal. तो रशिया की तरफ से ये पर्टिकुलर पॉइंट आया है एंड इसको गार्डियन और अल जजीरा दोनों ने वो किया है कि रशिया जो है वो मीडिएशन के लिए क्या कर रहा है, जो पेजेश्किन है उनसे बात कर रहा है कि शुड बी स्टेप इनटू द मीडिएशन, राइट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से ये चीज खत्म हो, नहीं तो भाई साहब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। Getting so that was the Islamabad talk that we concluded, right? And matlab the thing is ki the way things happened, it didn't come out to a point of agreement. But there are some experts which are saying it's a good start. Matlab, this is the very first time from 1979 when actually Iran and the US has this sort of discussion for the peace. This is the very first time when the parliamentary speaker, the foreign minister, the vice president of US are having discussion this closed or this closed. So it's a good start. Let's hope for the best. We get some particular good news soon. Second, they are also a bit skeptic about the role of Kushner and Witkoff. The media, the opposition, and even the current क्या कहना चाहिए, member of parties from the Donald Trump party itself, they are accusing these two as the Israeli agent और Israelis assets. सो उनको भेजने के पीछे का रीजन अभी तक समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, एक आदमी आपका दामाद है, ट्रम्प का, हाँ, कुशनर की बात करें, बट व्हाई टू सेंड हिम अगेन एंड अगेन? ओके, सो द प्रॉब्लम इज कि अभी दोनों साइड में कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, दोनों साइड में कुछ चीजें अभी भी क्वेश्चनेबल है। बट यस, दिस पीस टॉक वाज नॉट अ वेरी नेगेटिव इवेंट। The major experts and their opinion is saying कि it's a good beginning. This is the very first time since the Iranian Revolution 1970 in 1979 जब से ईरान और यूएसए के बीच में इस लेवल की पीस टॉक जो है वो देखी गई है। रोशन रुक जाओ, अपन पहले ये न्यूज़ डिस्कस कर लें फिर इस पे आते हैं। Right, so this is the very first time this is happening, and the way China, the way Russia is asking for mediation, the way they are entering into the talk, and they are kind of asking for this particular piece. This is a second good news. The third good news is the European Union countries criticizing Israeli action on Lebanon and other places. This can actually stabilize अगर ये रुकता है, if they are able to stop it from like attacking and other particular thing जो वो genocide कर रहा है, तो this can be a beginning of good peace in the Middle Eastern region. रशिया के साथ, सॉरी, इसराइल के साथ प्रॉब्लम ही यही रही है कि इसराइल नेवर एक्टेड टुवर्ड पीस। इवन इन लाइक अगर तुम थोड़ा बहुत भी रिपोर्ट्स एक्सपांड करोगे एंड एक्सप्लोर करोगे, यू विल गेट टू नो कि इवन इन दिस पर्टिकुलर पीस टॉक Israel was against it and Israel acted against it, the conditions and other thing. तो प्रॉब्लम रही है इसराइल को, हमने पिछले 70-80 सालों से अगेंस्ट द पीस एंड टुवर्ड द वॉर एक्ट करते हुए ही देखा है। सो अगर वर्ल्ड इज क्रिटिसाइजिंग इजरायली एक्शन ऑन द मिडिल ईस्ट, लेबनान एंड अदर प्लेसेस, and they are pressurizing Israel to stop this particular war. They are pressurizing America to stop sending the military aid and financial aid. तो ये चीजें थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में जा सकती है। देयर इज अ प्रिपरेशन टू bring a bill against this particular thing कि भैया इसराइल को जो मिलिट्री एसेट्स दिया जा रहा है, जो फाइनेंशियल एसेट्स दिया जा रहा है, वो बंद किया जाए कंप्लीटली। जो किन से लेके कई डिफरेंट ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं जो इस चीज के अगेंस्ट है। तो चीजें चल रही हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वी फाइंड द पीस सून। So that was Islamabad talk and its conclusion, right? With no deal but the positive hope. महाराष्ट्र बेस्ड जीके का लेक्चर चाहिए, आई गेस केशव सर ले रहे हैं, है ना, महाराष्ट्र बेस्ड जीके का। तो एक बार मैं उनसे बात करता हूँ कि कहाँ तक पहुंची है कहानी, एंड वी विल फिगर इट आउट। ठीक, एंड देन लेट्स डिस्कस अबाउट अदर आवर फ्रेंडली नेबरहुड अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान।
that is China. China is ठीक है दक्ष, हम नेक्स्ट क्लास में डिलिमिटेशन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर उसके साथ। चलो, so China is getting inspired from some of our political leader and they decided कि रीनेम करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। So China started giving fictitious names to Indian territories. हाँ, इन्होंने वो बोला है। सो अभी क्या हुआ है मैं बता देता हूँ, विक्रम मिनिस्ट्री की तरफ से, इंडियन फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री की तरफ से एक पर्टिकुलर वो आया है, स्टेटमेंट आया। मैं तुम्हें बता देता हूँ, इंडिया categorically rejected the China's periodic attempt for assigning fictitious name to the places in Indian territory, primarily in Arunachal Pradesh and Ladakh. Indian government maintains these actions are mischievous and perpetrators attempt to manufacture the baseless narrative which cannot alter the undeniable reality that particular region is an integral part of India. ये इनका स्टेटमेंट आया। अब मैं बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। लास्ट 1 ईयर की कहानी बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि भैया मई 25 में मैंने कुछ नोट डाउन भी किए हैं, तो लेट्स सेटल डाउन। बीजिंग ने एक फिफ्थ बैच ऑफ स्टैंडर्डाइज नेम निकाला था, जो भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। उसमें उन्होंने 27 लोकेशन इन इंडिया जो है उसको रीनेम करने की कोशिश की। अप्रैल 2024 में, राइट, इन्होंने चाइना इशूड द फोर्थ लिस्ट renaming 30 location including 12 mountains, 11 residential area, 4 rivers and 1 lake। जो इंडियन टेरिटरी में है उनका मानना है कि उनकी है और वो नाम दे देंगे। फिर बात करते हैं मार्च 2026 की। तो मार्च 2026 में चाइना क्रिएटेड अ न्यू काउंटी नेम, है ना, जीजियांग, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर सिटी जो काराकोरम और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है, फॉर द वॉलिटी, जो उन्होंने वहां पे एक सिटी डेवलप करने की कोशिश की जो हमारी सोसाइटी वो करती है। एंड अप्रैल 2026 में, राइट, उन्होंने 23 लोकेशंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है उसको रीनेम करने की कोशिश की। इसके पहले भी हुआ है, लाइक 2017 में देयर वर 6 प्लेसेस, 2021 में 15 प्लेसेस, 2023 में 11 प्लेसेस जो स्ट्रिक्टली इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है, उनके नामों को चेंज करने की कोशिश की। These residential places, these are geographical features like river, mountain, lakes, and other thing, and or even monasteries। अभी मैं कुछ लिस्ट निकालूंगा, बताऊंगा जिसमें उन्होंने वो करने की कोशिश की। दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नैरेटिव एंड अ प्रोपेगेंडा that these part is not Indian, they are part of Chinese territory historically, राइट। चाइना को हिस्ट्री पर हिस्ट्री के लेसन लेसन के लिए बुलाओ भाई किसी को, क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आता है कि भैया वो मैकमोहन लाइन जो है वो क्या थी, साउथ चाइना सी क्यों उनका नहीं है, इनको समझाना पड़ेगा कि तिब्बत उनका क्यों नहीं है, राइट, सियाचिन एंड अदर प्लेसेस उनका क्यों नहीं है। चाइना को ना अभी के टाइम पे कुछ तो गलत वो मिल रहे हैं, सस्ते नशे मिल रहे हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है, राइट। सो उन्होंने ये सारी चीजें करी हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, एंड फॉर नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सीधे तौर पे बोल दिया कि दीज फिक्स्ड नेम इज नॉट अलाउड, दे ऑल आर पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, राइट। कुछ पर्टिकुलर चीजों की अगर मैं बात कर दूं तो मैं बता देता हूँ कि उन्होंने कुछ नाम जो है उनको लिस्टेड अप किए हैं, राइट। जस्ट अ मिनट, मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। हाँ, देर इज अ टेरिटरी इन अरुणाचल नोन एज द तवांग, राइट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेरिटरी। दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट करता है विथ द नो मैंस लैंड। It's world's second largest Buddhist monastery and largest Buddhist monastery in India. I visited this place, one of the most peaceful journey that I made. एंड मतलब मजे ही आ जाता है ब्रह्मपुत्र के किनारे लकड़ी के उसमें पार्क में बैठ के आराम से गाने सुनना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी पीसफुल। इन्होंने इसका नाम चेंज किया। अगेन आई डोंट हैव अ वेरी गुड चाइनीज प्रोनाउंसिएशन, मैंड्रिन प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैं करेक्ट। If even if you read deep sea, he showed error that says China have right on Tibet, Nepal, and some part of Northeast। हाँ, वो चाइनीज लोगों को प्रॉब्लम होती है, राइट। सो तवांग का इन्होंने नाम रखा हुआ है वो यिंगलिंग,
प्लीज डोंट लाफ, मुझे नहीं पता आई एम प्रोनाउंसिएटिंग करेक्ट और नॉट, राइट। जो दाढ़ी है उसका नाम इन्होंने रख दिया था मेला रिक्रा, राइट। एंड जो मेशुका है सियांग वाले एरिया का, उसका नाम इन्होंने रख लिया था मनिकुआ, राइट। जो आंचवा है उसका पूमोला, राइट। एंड जो वो है सुबानसिरी है, उसका नाम इन्होंने नाका पुबारी रखा हुआ है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ी अपनी जगह, हमने जो नाम दिए हुए हैं कितने प्यारे हैं। लुक एट दिस, तवांग, है ना, बोलते टाइम पीस फील होता है। ये क्या रख रहे हैं, व्यो गे गेंग लिंग, है ना, मुझे नहीं पता क्या है इसका मतलब, बट है तो भाई, तुम यार नाम ठीक करो पहले अपना, मतलब जम नहीं रहा, इंचिंग पुंचिंग नहीं चलेगा क्या, ठीक है। बट हाँ, दे आर कंटिन्यूसली डूइंग इट। द पर्पस ऑफ डूइंग इट्स क्वाइट सिंपल, कि एक प्रोपोगेंडा और एक नैरेटिव जो है वो दोनों बनता है, कि दीज आर हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ चाइना एंड इन फ्यूचर चाइना कैन क्लेम इट, राइट। सो ये पर्टिकुलर चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली इस चीज को क्या कर दिया है, मना कर दिया है। चाइनीज जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स है वो लिस्ट को स्टैंडर्डाइज नेम करके बताते हैं, राइट। एंड दे रेफर दिस पर्टिकुलर जोन एज जांगुन जांगनान, जो साउथ तिब्बत में लोकेटेड है, और वो उनका ये मानना है कि ये गवर्नमेंट, ये चाइना का पार्ट है। इट्स लाइक समुराई इनवाइटिंग फॉर फाइट। आई डोंट नो, मैंने कुछ वो जापानीज एनिमे वगैरह देखे हैं, उनमें ये सुना होता है, राइट। सो दैट्स, इसके अलावा मुझे नहीं पता, आई एम वेरी बैड एट चाइनीज प्रोनाउंसिएशन, राइट। सबसे मुश्किल चाइनीज और रशियन ही होते हैं प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, बट ठीक है। सो दैट वाज द सेकंड बिग न्यूज जो अपने उसमें आई। बंगाल इलेक्शन एंड अदर पर्टिकुलर थिंग है ही। तो चलो एक बार न्यूज़पेपर को अपन रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है उसके बारे में आपको क्लैरिटी हो जाए। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सो ईरान यूएस ब्लेम ईच अदर फॉर द टॉक्स फेल, ये अपन बात कर चुके हैं, इस पे काफी डिस्कशन हो चुका है, सो वी नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। आशा भोसले, लेजेंडरी सिंगर, प्लेबैक सिंगर, खैर शी इज अ रिकॉर्ड होल्डर, मालूम तुम्हें पता है कि शी इज हैविंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के फॉर्म में। तो वी लॉस्ट हर, देयर इज अ कोइंसिडेंस जो कल ट्विटर में चल रहा था कि आज ही के दिन लता दीदी गई थी सेम एज पे, एंड वी आल्सो लॉस्ट हर एट द सेम एज ऑन द सेम डे। बट ठीक है, electorate falls by 10.2% in the nine state free union territories after the revision of the for the poll rules. So approximate 10% के आसपास जो वोटर्स हैं वो कम हो गए हैं आफ्टर द रिवीजन लिस्ट ऑफ SIR, राइट। यस, इट्स बिग न्यूज, 10% वोटर्स कम हो जाना। चाइनाज फिक्शियस रीनेमिंग ड्राइव रिजेक्टेड बाय इंडिया, इस पे बात कर चुके हैं, तो हम बात नहीं करेंगे वापस, ठीक है। तमिलनाडु हैज आउट परफॉर्म्ड अदर स्टेट अक्रॉस द मैट्रिक्स, सेज स्टालिन, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ये बात सही भी है कि तमिलनाडु में कई जगह पे आपको वो पर्टिकुलर चीज देखने को मिल जाती है कि दे एक्चुअली आउट परफॉर्म द नॉर्दर्न स्टेट्स, राइट। अब पॉलिटिक्स ये कहती है कि पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, बीजेपी के लीडर, उनका कहना है कि डीएमके इज अ पार्टी ऑफ करप्शन एंड कमीशन, जो यहाँ पे खैर, यूपी गवर्नमेंट opposition parties holds a mass event on the Ambedkar's birth anniversary tomorrow. डॉक्टर साहब की बर्थ एनिवर्सरी के साथ जो है वो कहते हैं बड़ी पर्टिकुलर रैली होने वाली है, उसमें ऑपोजिशन पार्टीज की, ठीक है। Over 30 Congress legislator head to Delhi seeking the cabinet regime. Right, so Karnataka के कुछ ministers and जो MLAs हैं, they are reaching to the headquarters कि उन्हें कुछ changes चाहिए कर्नाटका की leadership में. Let's hope for the best कि कुछ अच्छा हो. Telangana's trauma policy targets 8-minute emergency response. Again, another good initiative from the southern state. Right, कि भैया in case of any trauma, accident and something, जो करंट विंडो है 13 to 15 मिनट की है, उसे कम करके 8 मिनट किया जाए, जिससे जिंदगियां बचाई जा सके, राइट। सपोर्ट वुमेन्स कोटा लॉ अमेंडमेंट पीएम टू पार्टीज, पीएम जो है पार्टीज को कह रहे हैं कि वुमेन कोटा जो है उसको सपोर्ट करो, राइट। एंड जो पोजिशन पार्टीज हैं उनके अपने व्यूज हैं ही। चाइना's fictitious name we have already discussed ahead of polls, ED steps up action in Bengal. I'm not going to say anything,
राइट? ये उनका रेगुलर काम, चाहे मर्लिन हो, चाहे आईपैक केस हो, चाहे दूसरी चीजें हों, ये काम है। दे आर वर्किंग गुड। Bengal CM says BJP plans to divide state using delimitation. ममता बनर्जी ने अभी अभी रिसेंटली एक्यूज किया इनको। ऑल द बीजेपी कैंडिडेट इन बंगाल असेंबली पोल्स आर मोदी सेस पीएम इन द सिलीगुड़ी रैली। सिलीगुड़ी की रैली में मोदी जी ने बोला कि जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं जो असेंबली पोल्स में, वो सारे के सारे मोदी हैं, आप वोट कर रहे हो तो वो मोदी को वोट जा रहा है, राइट? आई एम नॉट श्योर। खैर, पॉलिटिक्स है। आशा ताई के बारे में बात कर ली है अपन ने। मेक श्योर कि ऑपोजिशन का जो व्यू है, श्रीमती सोनिया गांधी जो है बहुत लंबे समय से पॉलिटिक्स में है। शी इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ आवर कंट्री। मेक श्योर करना कि एडिटोरियल जरूर पढ़ना, तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा कि वो डिलिमिटेशन वर्सेस वुमेन रिजर्वेशन में इशू क्या है। ठीक है? इट्स लाइक इल्यूसिव डील, ईरान यूएसए मस्ट कंटिन्यू डिप्लोमेटिक एफर्ट टू एंड द वॉर, ये सुहांशी अदर का पर्टिकुलर वो है। Why India established elite afraid of taking risk. अच्छा है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। टूरिज्म एंड ट्रेड, ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में अच्छा एडिटोरियल जो हमने बात की, क्या क्या डिस्कशन जो है वो हो रहे हैं। सो इफ यू वांट यू कैन रीड इट। इकोनॉमिक न्यूज में भी आज कुछ खास नहीं था। ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइजेशन समथिंग लाइक दिस, वो थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। फिर फॉरेन जो न्यूज है वो तो चल ही रहे हैं, राइट? इजराइल्स बेन गिविर विजिट फ्लैश पॉइंट अलेक्सा मॉस कंपाउंड। ये वही पर्टिकुलर बेन गिविर हैं जो जिन्होंने वो एक्सट्रीम लॉ को सपोर्ट किया था कि वो सीधा फांसी देंगे पैलेस्टीनियंस को। चाइना टू बूस्ट ताइवान एक्सचेंज, ऑपोजिशन लीडर एंड सिट विजिट। यूएन फोर्सेस इन लेबनान सेज इजरायली टैंक रिम्ड इट्स व्हीकल इन द साउथ। सो देख लो भैया, ये टिपिकल इजरायली बिहेवियर है कि जो यूएन के फोर्सेस हैं उनको भी अटैक किया जा रहा है, राइट? हंगरी में पॉलिटिकल एस्केलेशन जो है वो हो रहा है। ट्रम्प थ्रेटन स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड आफ्टर यूएस ईरान टॉक एंड। मैं तुम्हें सिंपल से बता दूं ब्लॉकेड का मतलब क्या है। रिमेंबर दैट वेनेजुएला इशू, हमने बात की थी कि वेनेजुएला के जो शिप्स हैं, वेनेजुएला की जो शिप्स हैं उनको होल्ड करके, उनको ब्लॉक करके रखा है ईरानी नेवी ने। तो अब वो चीज यही कर रहे हैं, दे वांट टू डू द सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रम्प का कहने का मतलब ये है, राइट? यूक्रेन रशिया ट्रेड बार्ब्स ओवर द ईस्टर क्रूज वायलेशन। Nepal PM Balendra Shah to visit India after the bilateral mechanism meeting. Let's hope for the best. बालेंद्र शाह आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स कम्युनिटी में, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में, रील्स बोलते हैं शायद इंस्टाग्राम में, एंड सम अदर प्लेटफॉर्म्स में काफी ज्यादा छाए हुए हैं फॉर हिज एक्शंस, राइट? नायक फिल्म जैसे एक्शंस चल रहे हैं भाई के। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो आए और कुछ अच्छा करें। ढाका टू send a 20-member delegation to the China outreach. ढाका रिसेंटली हैड अ न्यू गवर्नमेंट विद प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान जो है, उन्होंने ये बात बोली कि चाइना के साथ आउटरीच प्रोग्राम के लिए हम 20 मेंबर डेलीगेशन भेजेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डेमोक्रेट्स आई मिड टर्म गेन्स एज अर्ली वोट पॉइंट बैकलैशेस अगेंस्ट ट्रम्प। सो डेमोक्रेट जो है वो सोच रहे हैं कि मिड टर्म में हमें फायदा मिल जाएगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं है, अभी आईपीएल चल रहा है एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द आईपीएल एट ऑल, राइट? दिस इज समथिंग जो कि आज का न्यूज था। सर, डिड यू सी टीएमसी बंगाल लूडो इफ अ माइनर स्पीच violates पीएम, why they didn't say anything about it? See, the rules which are being amended for social media, IT and other particular, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। They can act for defamation, they can act for some other thing, but वो कुछ खास काम नहीं करेगा। इलेक्शंस के टाइम पे ये चीज होती है। यू रिमेम्बर दैट हेमंता विश्व शर्मा की जो वाइफ थी, रिंकी भुइया शर्मा, उनके अगेंस्ट पवन खेड़ा जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने एलिगेशन किए थे फॉर 2 or 3 पासपोर्ट, गोल्डन वीजा प्रॉपर्टीज, राइट? उसी टाइम पे तुम देख सकते हो कि द असम पुलिस रीच टू द पवन खेड़ा's ऑफिस एंड होम इन दिल्ली, जबकि इलेक्शन के टाइम पे द पुलिस वाज अंडर कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो स्टेट के कंट्रोल में नहीं रहती है। बट इवन दो दे रीच टू दिस हाउस ना, तो अभी के टाइम पे प्रॉब्लम बहुत अलग है। खैर, लेट्स नॉट डिस्कस दिस। सो दिस वाज द न्यूज, राइट? जो अभी चल रही थी, है ना? एंड दिस वाज द न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर टुडे। मेक श्योर कि जो इस्लामाबाद टॉक्स है उनको थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करना।
This is a very important topic. This is the very first time Pakistan is initiating such kind of mediation. And again, same thing. We are not against Pakistan. No, we are not against Pakistani people and their effort like this. We are against Pakistani leadership, though. They help. They actually motivate terrorism, जो हमें नुकसान पहुंचाता है. But it's a good thing कि अगर ऐसा कुछ positive turnout हो, right? There is another news कि जहाँ पे इंडिया एंड रशिया को इंटरवीन करने के लिए कहा जा रहा है. सो अगेन मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट कुछ ट्वीट्स पढ़े हैं. So there are particular chances कि next phase of a mediation might be done in India, but confirmation नहीं है. So technically अब जो गेंद है, बॉल है, वो इंडिया के पाले में भी आ सकती है. So let's hope for the best कि हाँ, they did it, that's for sure. मतलब the thing is कि 70s के बाद से ही तो ये टेररिज्म जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंचा है. पहले तो देयर वाज अ फाइट ऑफ सर्वाइवल ना फॉर पाकिस्तान. नया नया स्टेट बना था, नई नई कंट्री बनी थी. रेगुलरली मिलिट्री रूल्स वगैरह जो होते थे, 71 के बाद से वो पर्टिकुलर स्टोरी बिगड़ी है इंडिया और पाकिस्तान की, जहां पे वो टेररिज्म को ज्यादा से ज्यादा वो करने लगे थे. राइट, ब्लीड इंडिया विद 1,000 cuts, ये उसी टाइम से डॉक्ट्रिन इन्होंने एक्सेप्ट किया था. राइट. तो दिस इज समथिंग जो कि न्यूज़पेपर था टुडे, आज का. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड. मजे करें. सी यू गाइस. खूब सारा पढ़ाई करो. थैंक यू.